Astrocast episode 4.2 into 10 to the power 9, right? अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द एस्ट्रोकास्ट। मैं आपका होस्ट इस्माइल मुनीदीन और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद है रुशान नदीम। आज एस्ट्रोकास्ट में हम पहली दफ़ा एक गेस्ट को लाए हैं। शायद आप उन गेस्ट को जानते हो। ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, और लाहौर में ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी आउटरीच सीन में एक माहिर किरदार अदा करते हैं, और उनका नाम है जी सर रुशान बुखारी। सर रुशान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एस्ट्रोकास्ट। Walaikum salam. Thank you for the very generous introduction. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी आपके सितारे। आज हम देखेंगे कि हमारे आसमान में क्या चीज़ें हैं जो विच मेक सेंस एंड क्या चीज़ें हैं विच डोंट मेक सेंस एट ऑल, एंड एक जनरल टूर ऑफ आवर स्काई। उसके थ्रू जो है वी आर गोइंग टू speak about different topics and speak about different experiences जो हमने एक्सपीरियंस किए in our brief experience in astronomy. ठीक है, so रुशान नदीम, छोटे रुशान, you can take it away. Thank you so much, Ismail, for acknowledging me here. That was a great touch, by the way. I should say that. Hanji. So I think इस्माइल ने सारा कुछ तो बता दिया है, मेरे बताने वाला कुछ रहा नहीं है, तो लेट्स जस्ट बिगिन। एंड इस्माइल आप स्क्रीन शेयर कर ले। और हो गया जी स्क्रीन शेयर। यस, तो अभी हम स्टेलेरियम का जो व्यू है वो आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है। जो स्क्रीन हमारे साथ शेयर्ड है वो स्टेलेरियम का एक आपके साथ व्यू शेयर्ड है। अब हम सर रुशान, आप बताएं ना, हम क्या किन किन ऑब्जेक्ट्स की हम आज बात करने लगे हैं। Well, देखें, आपके सितारों से शुरू करते हैं ना। तो रुशान नदीम, आपका क्या स्टार है? Should I be triggered by this? नहीं, बताएं, खुल के बताएं। नहीं, मेरा स्टार है, ऐसा करें जी, चलें आप वेगा से शुरू करें। आज वेगा से शुरू करते हैं। वेगा। Okay, all right. Okay, Lyra, summer triangle, here we go. ले जी, ये आगे जी वेगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली वेगा के बारे में तो वेगा इज वन ऑफ दोज ज्यादा बदनाम सितारा है ना, कि इस पे तो अरे यार ये क्या, आई थॉट पता नहीं मुझे आ गए एकदम स्क्रीन पे। सो वेगा इज लाइक वो जो नहीं होता, हर बंदे को पता होता है कि यार वेगा से शुरू करते हैं चीज़ों को। सो आई थिंक वेगा इस चीज़ में चीता है कि इट्स राइट देयर, राइट। समर में है, फॉल में भी है, स्प्रिंग में भी है, एंड इट्स इजीली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम लाहौर एट लीस्ट। वेरी ब्राइट इन द स्काई, राइट, वेरी कैची टू द आई, and it's a beautiful star. You know, there's a little story about Vega. So एक तो ये अगर आप देखें यहाँ पे जो bright वाला सितारा है, it has a little label next to it. तो there's a little thing about Vega कि इसके इर्द गिर्द एक डिस्क है मिट्टी की, ठीक है, well not मट्टी but dust की, something of that in astronomy we call पाह। पाह जानते हैं वैसे आप लोग? नहीं, क्या पाह? पाह, yes, PAH। चले खैर, ये वो मट्टी के जर्रे हैं जिनसे फिर चीज़ें बनती हैं। सो ये इसके इर्द गिर्द एक डिस्क है, बट व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट इट शुरू में, तो मैं अब वो डिस्क हबल भी नहीं देख सकता। इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। सो व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट द स्काई आज से कुछ 10-15 साल पहले, आई यूज्ड टू थिंक, हो यार हाँ मैंने पढ़ा था देयर इज अ डिस्क अराउंड वेगा। तो मैं एक्चुअली टिकटिकी बांध के जोर से ऐसे देख के आई यूज्ड टू एक्चुअली सी दैट डिस्क। और वो डिस्क आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ थी। वो वेगा के इर्द गिर्द तो नहीं थी, वो कहीं मेरे इर्द गिर्द थी। बट या that's a little thing about Vega. It's a beautiful star. I just love the name. I love this. इसका whole number वाला distance. I love it. Whole number वाला distance क्या मतलब? मतलब यार 25 light years away. That's great. You know? There's no inconvenience to Vega. And by the way, Vega की constellation भी, it's Lyra, वो जो बाजा होता है strings वाला harp. It's a beautiful constellation है। कितना parallelogram सा बना हुआ है, प्यारा सा यार। I remember कि when I was starting off in astronomy, तो मैंने सर्दी में शुरू किया था, तो when
समर केम अलोंग और फिर समर ट्रायंगल आया था, तो आई मेड इट माई मिशन कि मैं रिंग नेबुला ढूंढूं. सो इट ऑल हैड टू स्टार्ट विद वेगा. पहले वेगा ढूंढना था, उसके बाद सितारे ढूंढने थे. एंड हैड वेगा नॉट बीन देयर तो शायद वो भी ना मिलता मुझे रिंग नेबुला. बट यस, I आई think थिंक Vega Wait, Vega is when you say had Vega not been there, what do you mean? I think Vega What do you was mean, dude? up for interpretation, sir. I think Vega वो स्टार है जिसने सारे सारे एमेचर एस्ट्रोफोटोग्राफर्स को ना बहुत मदद की है स्टार हॉपिंग के बाद. लाइक हाँ. रिंग नेबुला ढूंढना है, वेगा पे जाओ. और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स विद इन द समर ट्रायंगल. आप वेगा वाज योर गो टू स्टार. तो आई थिंक बड़ा Yeah. इसका एहसान है हम पे. And you know, Well- अगर आप यहाँ पे देखें वेगा के नीचे to the left, there is something called double. डबल. हाँ. This is brilliant. दो सितारे हैं लेकिन वो करीब हैं. But if you zoom in, if you keep zooming इनका in, नाम and क्या if है? डबल डबल. ये तो Double double, क्या yes. कॉफी है. अच्छा, हाँ, I mean लेकिन- ये इसके अब I don't know कि इसकी डेटा में है कि नहीं स्टेलेरियम में. नहीं, इफ यू कीप जूमिंग इन तो वो निकल आते हैं. Oh, there you go. Oh. और ये दोनों स्टार्स में होता है, सो दे बोथ बाइनरी स्टार्स. और Yeah, but this is a वो क्या hexuplet system. It's a 6-star system. So ये वाकई बड़ा लंबा चौड़ा अजीब सा मामला है यहाँ पे. Right next to है. And वैसे भी generally Vega being in, well, not in the Milky Way, in the plane of the Milky Way, but near the plane of the Milky Way, इसके ऊपर आप एक random long exposure लगा लो around Vega, you get to see so much. कितने इतने सितारे नजर आते हैं. Even a 10-second exposure बहुत है. हाँ. Like बहुत से स्टार्स निकल आते हैं, पॉप आउट करते Are हैं. we just going to completely ignore the fact कि वेगा एक स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर भी है? Or are you guys too young for that kind of stuff? हाँ, हमने नहीं खेला हुआ. यार लगे बहाने वो भी दिखा दें, क्या कहते हैं, रिंग नेबुला भी दिखा दें यार. रिंग नेबुला इधर ही कहीं आता है ना. Yes, ये so- रहा, ये. तो does Oh man. हाँ, अब ये इसी पे बात करते हैं. हाँ. So, Well, So the ring Well, nebula that's, actually looks like निशानी the ring तेरी nebula for ये- once. हाँ. Like, आपको लग रहा है कि One of रिंग those है सामने. objects. हाँ. And बीच में I think we've all seen it with our eyes as well through a telescope. मैंने तो देखा है, रुशान ने भी देखा है. दोनों रुशान से देखा हमने है. तो देखा था, So- इकट्ठे देखा था, अभी इस करदू में हाँ, देखा अभी तो. Yes. यार it actually तो- does look like this, लेकिन कलर्स ये नजर नहीं आते interestingly. हाँ. Yes. बड़ा faint सा blue सा होता है ना. It's, To me it's more sea green. It's not blue. Yeah. बड़ा But that's- वो होता that's है. it. इतना सा नजर आता है surprising मेरी कि ये टेलीस्कोप ऐसा से, तो क्यों इतना नजर सा नजर आता है बस. ये बस जितना भी है. मटर That's मटर all. के दाने से भी छोटा. हाँ. Well, this is one of those objects by the way जिनका नाम बिल्कुल सही है. Yes, हाँ. वही मैं बात One कर of रहा था the- अभी. कि one ring of the nebula very few actually objects. looks like the ring nebula. Like That's a ring great nebula way to actually start, looks like the ring nebula. It actually looks like a ring. Oh, wait till Chale. we get on a couple of others. Okay, we're done with Vega. Vega की बहुत बात कर ली है. Next, I am going to suggest let's do Arcturus and Spica और उनके बीच में जो हिस्सा है. Okay, so this is Arcturus and It's नीचे a आता tricky है constellation, man. Spica. So it's basically in between two constellations. Of what I'm aiming on highlighting here is जो बीच में आता है आपका Virgo super cluster, which has M87, Markarian's chain, ये सारी चीजें. Hang on, here we go. So बीच में आती थी बहुत सारी galaxies. Here. Oh wow. ये क्या है? पता नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ. Yeah, नाम नहीं लिखा हुआ. But Interesting. between हमेशा I've always been fascinated by the area between Arcturus and Spica, because एक तो I do believe आपका Markarian's chain जो है, that whole string of galaxies, M87 जहाँ पे black hole की पहली तस्वीर ली गई थी, they're all in between these two stars. अब इस पे पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रहे, but you can see कि all these red dots, basically these are galaxies. Yeah, so interesting Correct. fact about the star जो आपने सर्च किया था पहले. So Arcturus. Arcturus. Yes. ठीक है, ये भी आसमान में बड़ा अच्छा नजर आता है इन स्प्रिंग में बड़ा अच्छा नजर आता है. आजकल थोड़ा लेट हो गया, बट दिस स्टार
एक तो इसके बारे में कुछ पेपर्स पब्लिश्ड हैं विच सजेस्ट कि ये शायद हमारी गैलेक्सी का नहीं है. It was actually adopted, yeah, sort of gravitationally pulled Captured. in, Yes. captured star from the intergalactic medium, because इसका relative, इसका जो proper motion है जिसको कहते हैं, that's not in line with बाकी galaxy के stars का motion. अच्छा. So if you ever want to see an extragalactic star, Arcturus. But is this like proven या फिर is it theoretical अभी? well अभी देखो ना उसके उस पे है, it's based on its radial velocity के ऊपर है ना, तो I mean there should be no reason for any star in the galaxy to move in एक और direction from बाकी सारे stars. So what can explain that? So probably because शायद हमारी जो एक pet galaxy है हमारे इर्द-गिर्द जो घूमती है, Sagittarius dwarf है, maybe ये वहाँ से import हुआ है. So this is an imported #imported imported star. Imported star. और one of the more striking stars in the night sky जो आपका इसका distinct yellow color है, golden color है, वो भी नजर आता है even from Lahore. Yes. तो खैर, we're done with Arcturus, I suppose, and Vega, and Spica. Okay, where are we going next? यार एक मुझे पसंद है स्टार, अगर हम उसकी तरफ जा सकें. Oh, you're right there. So Mizar. Yes. Mizar, whatever. It's a beautiful star. It's right in the middle of this saucepan. क्या बात है. करें इसको और जूम करें, देखें आपको दिखाएगा अपने रंग. Okay. Here we go. Yeah, there we go. ठीक है. So Mizar is basically एक अच्छा सा bright सा white star. It's part of the saucepan, the big saucepan in the sky. Big Dipper कहते हैं इसको. उर्दू जुबान में कुछ लोग इसको confuse करते हैं with दुबे अकबर. So ये जो अभी saucepan आपको नजर आ रहा है टेढ़ा सा, दुबे अकबर ये नहीं है, लेकिन the fact is कि people think of it as दुबे अकबर. Beautiful arrangement of stars in the sky. इसको constellation नहीं हम कहते. This arrangement, it's called an asterism. Asterism literally means सितारों की तरह का. Ism, right? So, amazing. One of those things in the sky which I had wished कि अगर होती, अगर ये असल में ना होती तो I had wished कि यार होती. So it's already there. It's a beautiful thing. So this is the big bear, right? This I should say किथों. part of the big bear. कहाँ से? There is no bear. Like, Exactly. Okay, yes. to our audience. That is the point I was trying to make कि हम अपने objects की बात कर रहे हैं कि कौन से objects अपने नाम के साथ match करते हैं. How does this look like a bear? इसके दूसरी टांग ही नहीं है बॉस. But sometimes I think, it's late at night. You're tired. You're looking up at the night sky. And you're trying to... You've had a day जहाँ पे you haven't hunted down any meat. You're hungry, you're starving, and Bear नजर आता है you're just आपको. looking up and you're making stuff up. बेर भी नजर आता है और भी बहुत कुछ नजर आता है. अभी इसके बाद dude, there's one एक favorite है मेरी. So इसके बाद हम उसको पे जा सकते हैं. जी जरूर. चले इसको एक दफा थोड़ा सा देख लेते हैं, then we can go to मेरी favorite constellation which makes so much sense. Okay, I am excited. लेकिन पहले हम मिज़ार को थोड़ा सा और देख लेते हैं. Yeah, so मिज़ार और एल्कोर, so ये जो दोनों पेयर हैं, ये दोनों स्टार जो यहाँ नजर आ रहे हैं ब्राइट वाले, ये एक्चुअली आंख से नजर आते हैं लाहौर से, बड़े आराम से. But to the ancient Greeks, it has been said through those scrolls जो उनको मिलते हैं and through some texts कि मिज़ार and एल्कोर were so close together in the past. अब थोड़े से दूर हो गए because of time, but पहले इतने करीब से they were used to check visual acuity, जो आपकी आंख की power है, कितनी सही है आंख. These two were used to do that. Now it's much more easier because they've sort of increased their distance between them. I remember अभी स्कर्दू वाले ट्रिप में ना मेरा और रुशान भाई का ना थोड़ा सा वो हो गया, sort of conflict के फोकस टेलीस्कोप का ठीक है या नहीं. तो I was saying कि नहीं ये वाला फोकस ठीक है, रुशान भाई कह रहे थे नहीं ये वाला ठीक है. And then he said कि वो देखो मिज़ार को देखो, मिज़ार एल्कोर नजर आ रहे हैं तो सही है, तुम्हारी आईसाइट वरना नहीं. Yes. Yeah.
So yeah. And mizar is one of those objects जो कि कहते हैं ना it keeps on giving. तो 70 से जब मैं देखता था it was just 2 stars और मुझे लगता था कि मज़ार और एल्कोर जो है एल्कोर was the second part of मज़ार. फिर मैंने एक दिन बड़े श्मिट कैसिगन के साथ देखा and it revealed एक तो मज़ार दोनों मज़ार जो थे right beside each other and then एल्कोर. So जितना zoom करते जाते हो I suppose you start seeing more. There is obviously a limit to कितना आप zoom कर सकते हो कितना आप देख सकते हो. But I believe कि this is a 4-star system or a 6-star system if I remember correctly. Yeah, I don't know. यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे. कहीं पे लिखा होगा. Just says double star यहाँ पे तो खैर. Anyways, let's move on. So रोशान आप किसी अपने favorite constellation के बारे में बात कर रहे थे. Wait, who are you talking to? I was waiting with that. बड़ा रोशान. Okay. All right. So अब हम चलते हैं अपनी next amazing constellation की तरफ. That actually looks like one of those things जिसके ऊपर उसका नाम लिखा गया. So if you can just search up Aries. Oh Aries. yes. So this is actually my constellation, my zodiac constellation. Here we go. Aries है क्या Zoom out करें जरा. हाँ. Look at that beautiful goat. Wow. We're seeing this. तो Look at that goat. बेर की एक टांग नहीं थी इसकी चारों टांगे नहीं है. उसकी कोई टांग नहीं है. उसकी सिर्फ पीछे वो जिसको कहते हैं ना पुट, उसकी सिर्फ पुट की वहाँ हड्डी रह गई है, बोटी रह गई है, और उसकी वो सिरी पड़ी है. ना उसके पाए हैं, ना रान है, ना उसका और कोई चीज़ है. So, and the interesting thing about this constellation, this is a hilarious part of the sky, and I'm so sorry, Roshan, आपका ये zodiac sign है, because it's gonna get butchered now, in the literal sense. So, ये इसका जो एक स्टार का नाम है, इसकी आंख देखें, इसका नाम क्या है? I always used to make fun of this name. शेराटन. कौन सा? Which one? ये जो ऊपर है यार, ये जो ब्राइट वाला. ये वाला. Okay. Sheraton. शेराटन. नहीं, मैं इसको जब पढ़ता था ना, so you guys just butchered it for me, लेकिन मैं जब इसको, well since we're on the topic of butchering, मैं जब इसको पढ़ता था, I used to call it शरारतान. बेटा शरारता ना करो, ठीक है? इतने शरारता ना करनी है. And then the star right next to it, हमल. मतलब what's next? ठीक है. क्या है, बल्कि देख ही लो यार क्या है on the better end of the goat. The better end of the goat. हाँ, वो क्या है वो पीछे? So here we're sort of moving where the star don't shine. भरानी. Well, there you go. I mean, Need so anything else we said? it needs no further explanations. So खैर anyway, ये है जी Aries, and Aries की बस एक ही अच्छी बात है कि हमारा जो एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का in the sky, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट Aries है बस. So Roshan, that's all the credit that you're gonna get. And I believe जो हमारा elliptical line जो है जिस पे हमारे सारे planets and the moon and the sun वगैरह चलते हैं, that goes through Aries, I believe. Yeah. Yeah. Zodiac. हाँ, Jupiter भी यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है. So, done with the goat. Any other animals जो कि हम देखना चाहें? हाँ, absolutely. So there's another one. अगर आप ये figures बंद करते हैं तो then we can check it out. बंद कर दो. ठीक है. Okay, so this one is weird. एक meteor shower के through कुछ साल पहले इस constellation का नाम थोड़ा popular हुआ था. It's always visible from Lahore, no matter the time of the year. लेकिन people don't know about it because बस ये भी वही है, इस तरह की बादशाह constellation है ये भी. अच्छा, इसके spelling भी बड़े weird हैं. Camelopardalis. Camelopardalis. Oh, there we go. Okay, I want you guys to guess now, please. कुछ अभी ना करना. Wait. What do you think this looks like? And be honest. Guessing by the name, एक camel होगा. Okay, Roshan, what do you think? मुझे तो एक ट्रायंगल नजर आ रहा है और तो कुछ नहीं नजर आ रहा. But नहीं, कुछ ट्राई तो करें. ट्रायंगल्स तो हर जगह ही है ना. अगर एक कैमल का बच्चा होगा
छोटा है थोड़ा। Okay, can you just turn on the graphics now? Oh, it's a giraffe. It's a हाँ giraffe. हाँ It's a giraffe. क्या क्या मैं क्या कहूँ इस पे? मतलब ये क्या, और देखें जरा इसको, देखें ये पोलारिस के कहाँ पे, लाइक with the context of Polaris, Polaris is right. it's right above the giraffe's Right. head. हाँ, right ठीक here. है, तो ये कॉन्स्टलेशन घूम ये स्काई में ही रहती है एज द स्टार्स टर्न अराउंड द स्काई, लेकिन द थिंग इज व्हाट, मतलब कहीं से कुछ तो तुक बनता है इसका यार। उसकी अच्छा, पीपल, एंशिएंट पीपल वर नॉट वेरी लेग फ्रेंडली, आई कैन इसकी भी टांगे नहीं है, इसकी सिर्फ आधी गर्दन भी है. it's like But the if we- oh god, it's too long, just stop here, you know. बस याद है like let's make it convenient for ourselves. नहीं यार, कुछ ना कुछ तो नजर आ ही रहा होगा ना. खैर, वैसे बाय द वे इसके जो एक अगर आप देखें ये जो नीचे गैलेक्सी है, जेली क्या है ये, जेली जूली रॉजर क्लस्टर, जॉली रॉजर. हाँ, इट्स एन ओपन क्लस्टर आई बिलीव. इसको जरा दिखाएं. Yeah, so that's as exciting as it gets, बस. So that's camelopardalis for you. और camelopardalis के डायरेक्शन से शहाब साकिब यानी टूटते हुए तारों की बारिश होती है, बहुत मध्यम बारिश, और उसको हम camelopardalis meteor shower कहते हैं. It happens once every year on the same date. ठीक हो गया. वैसे तो मेरे घर से दूसरी साइड की तरफ ना धर्मपुरा लगता है, तो वहाँ पे बहुत लाइट पोल्यूशन और डस्ट पोल्यूशन होता है, तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं नज़र आता है टुवर्ड्स पोलारिस अनफॉर्चुनेटली. सो इंक्लूडिंग यहाँ पे जो होते हैं मीटियोर शावर्स एंड स्टफ. खैर, लेट्स डू टू मोर बिफोर द मीटिंग एंड्स. ऑलराइट, सो वो जो कुछ अच्छे जो ठीक नजर आते हैं, आई थिंक उनमें से भी कोई एक देख आई लेते हैं. थिंक एक ऑब्जेक्ट मैं एक शेयर करना चाहूंगा. इट्स नॉट अ स्टार बट लेट्स गो टू Eskimo Nebula, the clown face nebula. Let's see if it is actually a clown face. ये भी ऑब्जेक्ट मैंने कल ही पोस्ट किया है और मैं सोच रहा था, मैंने अपनी तस्वीर को हर एंगल से देखा, मैंने कहा यार कहाँ से लगता है ये क्लाउन फेस. I'll leave it up to you guys. बाल मुझे नजर आ रहे हैं थोड़े बहुत. हाँ, बाल नजर आ रहे हैं, that's right. एस्किमो वाला ठीक है, right? हाँ, एस्किमो वाला तो सही है. He's wearing But the clown face, no. Nah. Again, we have to remember, dude, it's late at night. ये शायद जो है आपके स्टेलेरियम ने ही नाम रखा हो जो आपका क्लाउन फेस नेबुला. वैसे तो इट्स नोन एज द एस्किमो नेबुला. नहीं वो इसके साथ ही है, क्लाउन फेस नेबुला ही इसी को ही कहते हैं. मैंने अच्छा और भी जगह पे देखा है. चलो यार, आया होगा कुछ ना कुछ नजर. But I mean, you have deep sky objects में तो I think थोड़ी बहुत ज़्यादा accuracy होती है. You have the Eagle Nebula, you have the trapezium clusters, which actually look like eagles and trapeziums. Yes. खैर, Well, एक क्लस्टर है या एक ऑब्जेक्ट है that I'd like to go to, अगर हमारे पास टाइम है. जी. Let's do one more. Yes. Ptolemy's cluster, can we do that please? Yes. So there's a reason कि इसके ऊपर हम जा रहे हैं. It's not because Ptolemy है या whatever, but if you zoom into just a decent amount, बहुत ज़्यादा नहीं, या थोड़ा सा zoom out कर लें. All right. So हाँ, so अगर if you just squint hard enough, थोड़ा सा अगर आप ऐसे like इस तरह करके देखें तो it actually it spells an R. So yes, I remember. हमने ये देखा था लाइव. आर देखा. it's special. कहाँ का? Oh, The Air Force. Wait, can I annotate this? रुको यार, मैं annotate करता हूँ, इसको यहीं रखना. रोशान. There we go. Yes. So I just wanted to point out कि there is an R in space. ठीक हो गया. Good to know. By the way, कल they saw a question mark in space. देखी खबर आपने? नहीं. So James Webb की जो recent image है of this her big hero object, this weird thing, which looks really inappropriate. So उसके नीचे कोने में एक जगह पे zoom in करें अगर, तो there's merging galaxies का बड़ा जबरदस्त question mark बना हुआ है. It's beautiful.
Is it on Stellarium? नजर आएगा यहाँ नहीं से? नहीं, it won't be on Stellarium. जेम्स They वेब they तो just वही है भाई। discovered it yesterday. Okay. One last object जो कि I want to point out is the coat hanger, Al Sufis cluster जिसे हम कहते हैं, and this is also in near Cygnus. हाँ, near Cygnus. And अगर वैसे तो उल्टा हुआ हुआ अभी, but if you sort of tilt your head upside down, it actually makes a hanger. It's one of the So interesting. one of the only things जो कि I've seen personally, which actually looks like what it's named after. So ठीक है, coat hangers, ours, goats, Yes. bears. The coat all hanger of is that. actually a very interesting object. इसको देख के, because it's one of those things that actually looks like a coat hanger. There is no other way to put it. Although वहाँ पे लिखा हुआ है the snail, but that's just BS because it looks like a coat hanger. It doesn't look like मैंने a सारा snail. कुछ ही डाल दिया है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एवरी Yeah. पॉसिबिलिटी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है मिथ्स रिगार्डिंग दीज सितारे और कॉन्स्टलेशंस, इनकी हमने भी बात की है। तो सर रुशान, आपका कोई एक्सपीरियंस जहां आपको लोगों ने कहा हो कि सर ये जो बिग डिपर है इसका मेरे वीकेंड पे क्या असर पड़ेगा? Oh man. दुखती रग पे हाथ लगा दिया मैंने। Bleeps लगा देना एडिटिंग में. इसलिए तो लगता है मुझे ऐनक उतारनी पड़ेगी. अच्छा. यार, so it has happened in the past. People do ask me के हाँ अच्छा आपको भी शौक है, मुझे भी बड़ा शौक है एस्ट्रोलॉजी का, एंड देन वी हैव अ लिटिल sort of मुझे वो कन्वर्सेशन को मोड़ना पड़ता है कि नहीं सर वो असल में मैं कुछ और बात कर रहा हूँ. सो क्या सवाल ये है कि क्या उसका असर है कि नहीं है? वेल, बैड न्यूज़ फॉर दिस वीक. आपके इस हफ्ते में बुरी खबर मिलेगी आपको. वो ये है कि हम अगर साइंस की लेंस से बात करें, वहाँ जहाँ पर हमें एविडेंस चाहिए होता है, राइट, तो सिर्फ साइंस के लेंस से अगर बात करें तो constellations, the universe doesn't give a crap about your weekend. ठीक है? If anything, I'll borrow this sentence from Dr. Neil deGrasse Tyson. If anything, अगर आपको butt naked कहीं पे भी ड्रॉप करें अर्थ के ऊपर, you'll be dead in a couple of minutes. या अगर आपको स्पेस में कहीं पे भी आपने जाना है, and you think the universe gives something about your financial well-being, about your emotional happiness? No. So snap out of it. Snap out of it, Rushan. You're just insignificant. Are you saying this? कि मतलब मैं insignificant हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है? Well, if you think it, if you think the universe doesn't care about you and that makes you feel insignificant, brother, you need to start reading some books. Make some friends. Go hug a tree if you want to cry. लेकिन यार बात ही है कि as humans, so if we can be a little more politically correct about it, as humans हमारी ना हमेशा requirement रही है, need रही है कि एक तो one, we need to explain things, we have this urge, ठीक है, और दूसरा हम how can we make ourselves more special. So ये इस urge की वजह से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हुई हैं. और hey, what bigger playground to play on other than the universe? तो आप जब आसमान पे देखते हैं, and if you tell somebody, if you tell somebody next to you in a moment of grief and sadness कि hey, no worries, दादी अम्मा जो हैं वो अब सितारा बन गई आसमान में, that makes you feel great, that makes you feel special. Oh. And it explains something about death, maybe. तो you know, उस सब को साइड पे रखते हुए, I think the universe is a funny place. It's a hilarious universe. और इसके अंदर it doesn't really care about any of these things. I should put my glasses back on. अच्छा नहीं सही है तो. But depending on your next question, I might take them off. So. इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आपने ये एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ी सी रोशनी डाली, आप
थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये लोग Actually, I'm sorry. What I did was take away that light from astrology. लेकिन go ahead. नहीं, आपने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का जिक्र तो किया ना, मुझे आप ये बताएं कि चले एस्ट्रोलॉजी तो हुई, वो ये सितारों की चाल वगैरह जो सारा कुछ, तो ये एस्ट्रोनॉमिस्ट क्या होते हैं? ये कौन लोग होते हैं? क्या हम एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं? सॉरी फॉर पुटिंग दिस ऑन यू, बट देखो, ये हाथ है ना, एक्चुअली somebody told me कि मुझे एक दफ़ा किसी जगह पे, आई डोंट रिमेंबर विच प्लेस, कहीं इधर ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बाय द वे, दे इंट्रोड्यूस्ड मी ऑन द स्टेज एंड दे, आखिरी पूरी इंट्रोडक्शन वाज परफेक्ट, एंड देन जस्ट इन द फाइनल फ्रेज, जिसकी वजह से मेरी टांगें लड़खड़ाती हुई स्टेज पे चढ़ी, was and please give a round of applause for astronomist Roshan Bukhari. I was like, oh hey, where's that exit door? But ये कि astronomist, right? So palmist से probably वो लफ्ज़ निकला है, and I really wish कि ऐसा ना होता, but अगेन डूड, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है इसके साथ, ठीक है? वो एक तस्वीर में कोई एक सियासतदान है जो कि ऐसे कर रहा है, आपको पता है ना सियासतदान ऐसे करते हैं, they cropped and zoomed into that hand, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वर देन सिटिंग ऑन द टीवी एट 8 PM एट नाइट, और वो अपना उस पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं कि लुक एट दोज लाइंस, दैट मीन्स कि ये शायद अगले आपके वजीर आज़म हो। एग्जैक्टली, और That लाइक kind of BS, man. एवरी ईयर, लाइक हर न्यू ईयर नाइट पे आप इनको बहुत ज्यादा देखते हैं टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे, दे आर मेकिंग प्रेडिक्शंस अबाउट जो अगला आने वाला साल है कि Yeah. क्या होने वाला But है। hey, it's fascinating, ठीक है? It's just a humanistic thing to do. So yes, whereas मेरा एक हेमिस्फेयर दिमाग का wants to strip them. I mean, कुछ मैं उनको सब करना चाहता हूँ, ठीक है? But then there's another half of my brain that tells me, yeah, it's just a human thing to do. Relax, ठीक है? कुछ नहीं होता. As long as the universe is not affected, तब तक खैर है. But the day Lums starts to introduce freaking astrology as their They already did. course, they did, but then आप लोगों की मदद से, सोशल मीडिया की वजह से, they clamped it down, which is great. I mean, can you imagine that? Can you imagine that conversation उस class में? Again, no offense to the instructor. Well, हल्का फुल्का, yes, but you know, let's be honest. So to answer your question, by the universe, I think it doesn't even have that time to do this kind of BS, man. Imagine how many other civilizations इसके लिए universe फिर horoscopes निकाल रहा होगा. Forget about it. तो For a drop the F bomb here, I mean, just move on to the next question. नहीं, I agree कि more often than not हमें when we're doing outreach, या when we're doing public astronomy sessions, या फिर when we're on platforms such as this podcast, हमें we get to meet a lot of people, and it's not just कि you know like कुछ लोग तो होते हैं ना कि they enjoy, they know what they're doing, right? They know what they're doing when they ask you these kinds of questions. But कुछ लोग होते हैं who actually genuinely believe in these things, and it's also occasionally a part of what they've been brought up with. So काफी दफा हो चुका है कि there have been people who have come up to me and said कि भाई आप you're reading poems, you're looking at the stars, and you're trying to tell the future, तो ये बहुत सख्त गुनाह है. But Okay, the best that's one way to put it. बहुत सख्त गुनाह है. I mean, they used much stronger words, like instead of tone down करके बता रहा हूँ. But I suppose the best you can do is explain to the best of your ability what exactly you're doing, and the difference between what you're doing and what other people are doing. It doesn't even have to be an explanation, dude. ये देखें, ये and I wish अगर हम in person में होते तो मैं आपको ये पहनाता, ठीक है, और मैं आपसे कहता, okay, do you see the world blurry now? And if your answer was yes, तो मैं आपसे कहता, all right, उतार दें. So I mean, do you want to see the world with science? Okay, does it look blurry? तो फिर उतार दें. Right? It doesn't affect anything. As long as you're not preaching it, and then, well, you're not pushing people to change their opinion, that's fine. But मसला तब आता है ना when people push to change your opinion, like your perspective on it. or like they try to impose कि नहीं आप ये कर रहे हैं कि आप जो Well, there's a reason.
there's a reason कि अच्छा कायनात में black holes exist करते हैं. There's a reason that there are neutron stars out there. So you can just send them on talk a to flight. Elon and send them on their starship on the way to hell. Yeah, just kidding. So yeah, I don't. लोग कहते हैं, लोग कहेंगे. Carl Sagan ने 80s में कहा था in one of his episodes in Cosmos कि astrology will never die. And well, maybe never is a strong word here, but maybe for the 22nd century के शुरू तक it will exist, dude. So yeah. I mean, So, But it is something. wait. Imagine करें आज से कुछ हजार साल बाद when the constellations change their shape. Oh yeah. And that's where when the fun. Earth's की precession of the Earth causes the zodiac to slightly shift. Yes. Oh, that'll be an interesting time, eh? The Orion the Hunter was after पता नहीं क्या, and Artemis and Apollo, the brother and sister combination, पता नहीं क्या, उन्होंने उसको hunt down कर दिया, and like that was the end of Orion the Hunter. पता नहीं, like that's what I've heard. Well, that's what the rumors say. No, wait. आप बता रहे हो कि ये myth. So are you talking about constellations की myth stories? I don't know, like जो जो भी stars constellations से related जो भी myths वगैरह Okay, या so stories मोहम्मद जो अली इनके साहब जो हैं, who's a big name in लाहौर की in पाकिस्तान की एस्ट्रोफोटोग्राफी की दुनिया, उन्होंने एक दफ़ा रिंग नेबुला को देख के कहा था कि ऐसा लगता है कि ये एंड्रोमेडा और ओरायन की Orion मंगनी की की अंगूठी मंगनी है, की अंगूठी है. right? But I don't think we're talking about those rumors है. I think मेरे लिए जो सबसे myth है एक नाइट स्काई को लेके, which as I grew up I realized कि oh god that was completely like थोड़ी सी भी उसमें वो नहीं थी. वो है टूटते तारों पे दुआ करना. I mean वो जो क्या विश मांगना, Oh ठीक है. yes. That to me, as soon as the space station started showing up in the night sky, because it's sort of like a टूटता तारा that never really टूटता. Even ये And I ये was like, ये itself एक myth है मेरे ख्याल से कि टूटा हुआ सितारा itself एक टूटा हुआ सितारा नहीं होता. yeah, but forget about that, dude. Just imagine करें कि मैं दुआ में हाथ उठाए हुए हैं या somehow मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, स्पेस स्टेशन आ रहा है, and as it's moving across the coordinates RA and deck, I'm also moving my hands towards the space station. Can you imagine that kind of a slewing behavior? But Equatorial yeah, mount I think आके मेरे लिए टूटता तारा was a big hit to me कि यार, oh god, that has nothing to do with stars at all, you know. रुशान, अगर आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग परमिशंस दे दो फिर से. There's this story I have control. about about the hunter and the Pleiades, right? So बड़ी मजे की कहानी है, and it sort of, what fascinates me about it is you can actually see the story unfolding आसमान में, ठीक है? So Orion, it is said ke on one of his hunts fell in love with one of the seven sisters, right? ठीक है? And in the night sky you have Orion यहाँ पे, right? So this is Orion, Betelgeuse, Rigel. We all know Orion very well, ठीक है? And he's facing this way. And then you have the Pleiades right here, ठीक है? The seven sisters, right? So Orion falls in love with one of the seven sisters. Sorry, I'm back again. So Alright. as he falls in love with one of these sisters, he abandons his hunt and he starts chasing them, right? And they're obviously running from him. But the जो मजे की बात है throughout all this story, and I always सर्दियों में जब भी I do outreach and stuff, I always point out this story कि at the beginning of the session और फिर session के end पे मैं कहता हूँ अब देखो कि where is Orion and where are the Pleiades, because through the night sky Orion seems to be following the Pleiades across the night sky, abandoning his hunt and chasing the person he loved. So that's one of my favorite stories. Obviously there's no truth to it. There's no truth ke hunter asal mein tha and the seven sisters were seven sisters, but it is an interesting story which I like to speak about. That's actually fascinating, and I think it's an awesome way to
डू इट एक आउटरीच के अंदर. आई मीन पीपल विल नॉट फॉरगेट कि जो अगर उस वक्त आप स्टोरी के साथ लिंक कर दो. हाँ, लोगों को बहुत पसंद आती है ऐसी चीज़ें, लाइक गॉसिप होता That's है एक great. तरह का. But what about जो Canis Major है, so the big dog that's following Orion, तो क्या like फिर what does that do in the story? वो ओरायन के पीछे चलता रहता है. I suppose he was his. I'm not sure about ओरायन की जो original mythology थी, but I believe कि it was his dog जो कि उसके साथ चलता था. आई थिंक Yeah, yeah, इसका yeah. भी था कि उसके ये कैनस मेजोरिस वाज अ डॉग ऑफ ओरायन, और वो हाँ. बाकी जो कॉन्स्टलेशन जो एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनको चेज करता है, जो मुझे याद है थोड़ा बहुत, जो मैंने कुछ सुना हुआ है, रूमर्स. I mean, if Orion, according to you, Ismail, if Orion is like falling in love with one of the sisters, so Orion is now, it's safe to say that Orion is now on a new hunt. And so, तो जो कैनस मेजर को क्या वो कोई हड्डी डाल के पीछे करता है कि hey Skippy just you know go fetch that bone while उसके I उसके उसके साथ ही चल रहा है, आप देख सकते हैं. उसके पीछे पीछे ही that's जा रहा right, it doesn't leave him. है. That's very But interesting. So बीच में उनके एक bull भी है, right? That we can see here. yes, yes, Taurus. yes. ये टॉरस जहाँ पे अल्देबरान वगैरह आ रहा है. How interesting. Pause कर देता हूँ. By the way, if you look just below Orion के पैर, there's lupus. तो अगर आप constellations की figures on करें, तो lupus को check करें. So there's a bunny right next to Orion, and Orion is pretty, busy with his hunt. So Like, there's a थोड़ा bunny, सा, there's a dog, there's a bird, there's a horse, horse पीछे है, bull there's आगे a है, bull, there's the and goat. yeah, ये हम so I कहीं think और निकल Orion गए is हैं the. इसमें. I mean, अगर आप इस तरह देखें आसमान को, तो it really looks like a story, doesn't it? It does. That's fascinating. Yeah. Chaotic किस्म का, and it looks like one of those जो आपके पुराने रोमन टाइम्स के, ग्रीक टाइम्स के Yeah. स्टोरीज होते हैं. By the paintings. way, अगर इधर ही रखें एक सेकंड स्क्रीन को, so you can see कि बड़ा कुछ हो रहा है, right? You can see ये कौन है जो Perseus has the head of Medusa, उसने like this, like he has beheaded this monster and he's holding its head from its hair, ठीक है? And there's a goat, there's a very dangerous किस्म की bull there, there's a giraffe and everything. But in the middle of everything, there's a random triangle. There's just a random triangle. Triangular. And Rashan Nadeem, जब हम गए थे स्कर्दू में, so you can tell, but triangulum की जो triangulum की vibe जो है ना, it's very disloyal के साथ, it's very random. तो यहाँ पे भी in the middle of these characters and stories, there's this little geometry freaking item, and even reality में Andromeda and Milky Way are going to fight it out and they're going to merge into this galaxy, dramatic scenes. और ये But side background में आराम से वो float करती हुई जा रही है, triangulum galaxy. So anything that is associated with the word triangulum is so random. biased triangle. Biased triangulum. Like very randomly मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा. सवाल या एक रिक्वेस्ट कह लें. हमने आउटरीचेस की बात की, जैसे अभी हमने बात की कि ये हमने लोगों को बताते हैं, ये जैसे इस्माइल ने बताया कि ओरायन जो है प्लेडीज को चेज कर रहा है. तो ड्यूरिंग दीज आउटरीचेस जो हम करते हैं, एक कोई वाकया, सरुशान आप भी, इस्माइल आप भी, जो बहुत ही आपके जहन में रह गया हो, कोई बहुत ही मजे की कोई बात हुई हो, किसी पार्टिसिपेंट ने कोई बहुत ही कोई चीज इम्पोज करने की कोशिश की हो आप पे, या आपको कुछ बताया हो अपनी तरफ से एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, जो आप शेयर करना चाहें. सरुशान आप पहले. Oh, okay. Well, I'll just I think talk about the most recent one. So हम सूरज दिखा रहे थे कुछ लोगों को, and then
उसमें ये होता है कि इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू सी फर्स्ट, लाइक टू फाइंड द सन थ्रू द आईपीस. तो टेलीस्कोप में सूरज एकदम ढूंढना कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो लाइक कुछ नजर नहीं आ रहा. लेकिन जब हम देखते हैं तो सब कुछ नजर आ रहा होता है. सो जब हम देख रहे हैं तो देन देयर इज दिस रूल सॉर्ट ऑफ, कि जब कोई लोग देखते हैं तो जो हम लोग होते हैं, वी आस्क देम क्वेश्चंस व्हाइल दे आर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, just to engage them. And so they were looking at the sun, and I asked them कि हाँ जी नज़र आ रहा है. उन्होंने कहा जी. मैंने कहा अच्छा गोल है कि ट्रायंगल है? गोल है. ठीक है. ग्रीन है कि ब्लू है? एंड देयर लाइक ग्रीन है. आई एम लाइक व्हाट, क्या? एक मिनट, ग्रीन है कि ब्लू है? एंड देन देयर लाइक येलो है. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. I once asked a kid during a solar observation, and I gave them two options. Triangle नजर आ रहा है या square नजर आ रहा है? And they actually said triangle नजर आ रहा है. So I don't know. I mean, but yeah, ये एक interesting चीज है outreach के अंदर that happens. There are incidences where people actually come up to you और उनको लगता होता है कि जैसे they know everything and nobody knows everything. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक्सचेंज होता है कि आप लोग तो कहते like they just give us this ownership of science instantly. उनका सवाल है आप लोग तो कहते हैं कि कायनात बिग बैंग से शुरू हुई थी, कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? इट्स लाइक दे आर लाइक सो क्या कि पैसिव एग्रेसिव अबाउट इट. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. एंड देन देयर वाज वन इंसिडेंट, बाय द वे, इससे पहले कि आप लोग अपना शेयर करें, देयर वाज वन इंसिडेंट वेयर somebody किसी यूनिवर्सिटी में इवेंट हो रहा था, एंड वी वर शोइंग देम द नाइट स्काई थ्रू हमारी लेज़र वगैरह. एंड आई शोड देम कि वो देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लैनेट वीनस है. ठीक है. एंड देन दे लुक्ड एट वीनस अपनी आंख से, एंड देन वी स्टार्टेड टू डू टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन एंड डेडली. ऑल ऑफ अ सडन दैट वन गाय, जिसको मैंने कहा कि देखें जी ये वीनस है, और उस टाइम बड़े वो थे कि but when he came up to the telescope की line, he actually refused to see through the telescope because उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था. and these were also my sort of early days, तो मेरे पास इतना experience नहीं था. and he came up to me and said, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और ये बिल्कुल वीनस नहीं है, मैंने अपनी आंख से देखा है और मेरा ख्याल है कि ये कुतबी सितारा है. What the hell is a कुतबी सितारा? मुझे तब ये भी नहीं पता था. एंड मैंने कहा सर आप एक मिनट वेट करें प्लीज़. आई कॉल्ड हमारे सोसाइटी, लाहौर इस्लामिकल सोसाइटी के एक मेंबर हैं मारूफ मियाँ. तो मारूफ साहब को मैंने बुलाया, एंड मारूफ साहब न्यू हाउ टू हैंडल इट. ओ माई गॉड, मारूफ साहब ऑल्सो गॉट इन टू एन आर्गूमेंट विद हिम. तो वो मैं अब आई एम दिस न्यू मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी trying to save this telescope event, और मैं लाइन में बच्चों कह रहा हूँ हाँ बेटा देखें वो जो नजर आ रहा है ना वो वीनस है, आपको नजर आया? एंड मेरे बैकग्राउंड में नहीं अरे वीनस नहीं, वीनस. अरे लाइक सो वियर्ड. लाइक ठीक है बेटा ये है प्लैनेट वीनस, एंड पीछे वीनस नहीं. इट वाज सो फनी मैन. तो वो एक बड़ी मेमोरेबल सी चीज है. दिस वाज बैक इन 2014, सो आई एम जस्ट गोना पुट इट आउट देयर, whoever thought कि वो वीनस नहीं है, yeah. Yeah. You watching? I don't know. मेरे लिए बड़ा मजे का फुल सर्कल मोमेंट होगा कि if he is watching. लेकिन मेरे लिए there isn't one specific experience. Obviously outreach करना बहुत, एक तो it's a very great privilege कि आप outreach कर सको, and it's also a very interesting privilege. वहाँ पे especially depending on where you go, Lahore Science Fair वगैरह जैसे events पे you get to meet people from all over Pakistan, right? With different cultural beliefs, different religious beliefs. So एक तो उनके साथ converse करना, often to the point of arguing with them, but constructively arguing with them, that's very interesting. काफ़ी दफ़ा होता है, but I remember speaking on the subject of Venus. कुछ लोग होता है ना, when they're looking at Venus and when Venus is in its crescent phase, तो उनको लगता है कि भाई when they're looking through the telescope for the first time, they think they're looking at the moon, right? So हम काफ़ी ज़्यादा ना emphasize करते हैं
कि दिस इज वीनस, दिस इज इन द मून. चांद हम आपको बाद में दिखाएंगे, कुछ देर बाद में दिखाएंगे, बिकॉज वीनस इन इटसेल्फ थोड़ा सा वो होता है, मीडियोकर कह सकते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होता है कुछ लोगों के लिए हु आर एक्सपेक्टिंग सरफेस बैंड्स और वीनस के सरफेस पे आग लगी होगी इस तरह करके. बट हाँ, सो वी आर लुकिंग एट वीनस. और सेशन खत्म हो गया तकरीबन फॉर वीनस, एंड वी मूव टू द मून, एंड द मून वाज आल्सो इन द सेम फेज. और मून दिखाया तो हर एक का जो है ना यूरिका मोमेंट हुआ कि भाई पहले क्या दिखा रहे थे और अब क्या दिखा रहे हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड देन. टेलीस्कोप हिलाया थोड़ा सा, उसके बाद से वी स्टार्टेड टू क्लैरिफाई कि ये वीनस है जिसको हम देख रहे हैं, बाद में हम चांद देखेंगे. वीनस पे कुछ नहीं नजर आता, चांद पे बहुत कुछ नजर आता है. एंड more recently, at one of these sessions, we had a decent sized audience for outreach. और वहाँ पे जो है there were these two kids from two separate families, लेकिन they collectively knew more than we all knew. Even those of us who were organizing the session, we didn't know as much as these kids knew. So even their questions थोड़े से वो थे difficult to answer. Can you share where was this? This was at Olomopolo Studio. Huh? In Garden. Olomopolo Studio in Acha, Garden Olomopolo. Town. Okay. Sorry, Muslim Town. So हाँ, but it's always a very interesting experience होता है. It's a very wholesome experience and बहुत fulfilling होता है. So regardless of how many arguments you may have, regardless of many how many kinds of people you meet, I think it's a very great honor कि you get to be in that position जहाँ पे आप ऐसे लोगों से के साथ interact कर सकते हो. एक ये जो डिसअपॉइंटिंग वाली बात की है ना अभी इस्माइल ने कि वीनस बहुत डिसअपॉइंटिंग. आई रिमेम्बर 2020 की बात है प्रोबेबली, जब मार्स बहुत ज्यादा अपनी ऑपोजिशन पे था ना, जो उसकी वन ऑफ द वेरी क्लोजेस्ट अप्रोचेस. तो आई रिमेम्बर उस टाइम पे ना मार्स वाज अमेजिंग, लाइक बहुत अच्छा व्यू था मार्स का, इवन फ्रॉम अ स्मॉल टेलीस्कोप. मेरे 4.5 इंचेस वाले न्यूटोनियन से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था. यू कुड सी द आइस कैप्स और वो डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह फीचर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड आई रिमेम्बर इसी तरह हम आउटरीच कर रहे थे जेड्स पे ही, और आई रिमेम्बर एक फैमिली थी कोई, लेड बाय एक अंकल. उनकी ना कोई 3-4 बच्चे थे लाइन में जो लगे हुए थे मार्स देखने के लिए. तो वही हमारे पास जैसे जेड्स पे यूजुअली होता है, एक टेलीस्कोप से चांद दिखा रहे थे हम, मेरी वाली टेलीस्कोप से मार्स दिखा रहे थे इसी तरह से. तो अब वो ये मार्स देखने वाली लाइन में लगे, मैंने एक्सपेक्टिंग पता नहीं इतना बड़ा मार्स जैसे लोग. अब मार्स इज ऑलरेडी वेरी डिसअपॉइंटिंग. मार्स इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जो लाइक इतना लोगों को पसंद आता है, बट स्टिल रेड डॉट भी जो आपको एक नजर आ रहा है, यार रेड कलर का कुछ भी आपको एक नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपको एक आइस कैप नजर आ रहा है. फॉर मी लाइक बहुत बहुत है, बहुत है. अब एक बच्चे ने देखा है और ही गोज ऑन टू द नेक्स्ट टेलीस्कोप, और फिर जो अब्बा जी थे उनके, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में मैं भी जरा पहले मुझे देख. ही लुक्स थ्रू द आईपीस और कहते हैं बस ये है. एंड मैंने कहा जी यही है. Welcome to the universe. वेलकम टू द. मैंने कहा जी यही है. उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया इस बात का. ही हैड एब्सोल्युटली नो रिएक्शन टू दिस. ठीक है, और वो लाइन से हट गए, और उनकी बेटी थी नेक्स्ट लाइन में, वो अभी देखने के लिए आगे हुई है. छोड़ो बेटे, छोड़ो, कुछ भी नहीं है. ओहो. छोड़ो छोड़ो, आओ चले. मैं आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू एट दैट पॉइंट. Wait, which scope was this? Mars जिसे देख रहे थे? क्या चीज ये? वही मेरा Which telescope? 4.5 inches reflector न्यूटोनियन. अच्छा, और magnification was it less than 100? नहीं, it was more than 100. नहीं ज़्यादा था. I think इस्माइल भी था मेरे साथ उस आउटरीच पे. मैं भी वही था. Well, they were probably not primed for it then. वो I think expect बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आप सही कह रहे हैं. Yes, तो वो Yeah, but इसलिए चीज़ें बड़ी मजे की होती हैं, ये वाली खास तौर पे कि यार सैटर्न को देख के भी I've heard this कि सैटर्न को, मतलब मैंने खुद सुना हुआ है, सैटर्न नजर आ रहा है, अच्छा ये तो आंख से भी ऐसे ही नजर आ जाता है, आप क्या दिखा रहे हैं? How do you see Saturn?
So I mean, people are people. People are interesting. And then there are these moments like टेलीस्कोप से हट के, जैसे LSM पे मैं बता रहा था किसी और को, मैं ना जेम्स वेब के बारे में बता रहा था. दे आस्क्ड अबाउट जेम्स वेब का फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है. आई वाज टेलिंग देम कि उसने अर्लीस्ट यूनिवर्स की लाइट कैप्चर करनी है, गैलेक्सीज, अर्लीस्ट गैलेक्सीज, वो वाली सारी चीजें. एंड देन देयर वाज अ ग्रुप ऑफ टू पीपल जो साथ खड़े हुए बस सुन रहे थे. दे वर नॉट, उनका क्वेश्चन नहीं था ओरिजिनली, बट दे वर, उन्होंने एक फॉलो अप क्वेश्चन मेरे से किया है इस रिलेटेड. कहते हैं, मैंने उनको फारिग कर दिया, जिनका क्वेश्चन था वो फारिग हो गए. देखा, आप जेम्स वेब की बात कर रहे थे. सी, वो जो ओनरशिप देते हैं ना आपको, आप जेम्स वेब की बात कर रहे थे. आप कह रहे हैं कि जेम्स वेब एलियंस ढूंढेगा या लाइफ ढूंढेगा. मैंने कहा पॉसिबल है नहीं. अभी आपने कहा कि ढूंढ ली है. कहाँ पे, कौन सा प्लेनेट है जहाँ पे एलियंस मिल गए हैं? Oh no. नहीं, मैंने ये नहीं No, कहा. no. नहीं, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन बट दे, Yeah, मैंने मेरे से काफी it's बहस की interesting. कि नहीं आप पता यही है कह वो, रहे थे. Yes. yeah, I think एक चीज जो mostly people are nice about it, and they just look at it and they're like, जो ज्यादा कुछ जगहों पे ऐसे लोग भी होते हैं जो ज्यादा आपको अच्छा फील कराने के लिए भी, एंड दे जस्ट ग्लैड कि दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, चाहे उनको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा. बिल्कुल. दे जस्ट लाइक, ओह थैंक यू, बड़ा अच्छा था, थैंक यू सो मच. एंड आई सीन कि आप क्लासिफाई कर सकते हैं लोगों. एंड देन देयर आर अदर पीपल हु लाइक, वो जो बात कर रहे होंगे ना देखने से पहले, वो वही बात कंटिन्यू रखते हैं देखते वक्त भी. वो मैं वहाँ पे गया था ना, उनकी मास्टर बिरयानी की बिरयानी बहुत अच्छी है, हाँ उसके अंदर ना मलाई बोटी वाला फ्लेवर बहुत अच्छा, ये करके वो चले जाएंगे. लाइक क्या, यू नो. So yeah, there are different types of people, and something that outreach actually makes you learn, I realize बड़ी जल्दी, you cannot please all the people Everyone. all the time. Yes. Yeah, astronomy outreach does it for you, you know. Yes. बहुत से लेसन आपको खुद मिलते हैं इससे, कि किस टाइप के बंदे से आपने बात किस तरह करनी है. लाइक कितनी देर तक उसको आप एंगेज रख सकते हैं, उसके बाद कोई फायदा नहीं है. एंड यू शुड जस्ट प्रोबब्ली लेट इट गो. And then there's nothing like एक outreach के ऊपर कोई बंदा देख के उसके expressions ही change हो जाए. Expressions, yes. And then you can genuine tell कि they're happiness होती fascinated. है. Yes. Yeah. Genuine wow जो अंदर से निकलता है. फुलफिलिंग होता है, फुलफिलिंग. ठीक है जी. So we're running out of time again. First of all, Sir Roshan Bukhari, thank you very very much for joining us on this thank you episode of for having me. Astrocast. बहुत मजा आया. बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशन था. अल्लाह खैर ही करे. जो शान ने एडिटिंग में चीजें निकाल ली है, डाल ली है, क्या होगा उसमें. But again, thank you for coming in, and it was a pleasure having you. Thank you so much. Thank you for having me. It was very good, and I think मैं आप लोगों की देखता भी हूँ YouTube के ऊपर. So अगर कोई देख रहा है इसको यहाँ पर इस टाइम, मतलब YouTube पे, तो इनको सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दीज टू ऑल्सो हैव देयर इंस्टाग्राम्स, एंड ये अपनी एस्ट्रोनॉमी की पिक्चर्स भी अपलोड करते हैं. दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सो congratulations on that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. And I think that's it. Or we'll see you guys next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz. All right, bye bye. हाँ जी. हो गया. हाँ जी. 5000 क्या था, 5000 फुट खा गए. यार वो क्या था जुमला? 5000 फुट ही था. 5000 फुट खा गए. 5000 फुट खा गए. यार खीरा यार. Anyway. लेकिन I mean, Rushan's already promoting his thing, यार. वो उसने अपनी तस्वीर वो लगाई हुई है. So I doubt you guys can work it out. yeah. I can already see cracks here. यार कोशिश Rushan is known करेंगे. for his modesty. I mean, अगर वो तस्वीर ऊपर से हटा दें, he's known for his modesty. अगर वो तस्वीर उठा दे. नहीं कोई बात नहीं. Rushan edit करना है, so it's up to him, dude. You can just cut this segment out.